ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वाह शेफ में। अभी हम प्रियंका के घर में हैं और वो आज हमें दिखाने जा रही है मसामान करी। तो आइए चलिए देखते हैं ये करी कैसे बनती है। Thank you, Shagun, for coming to my home and welcome to my kitchen. I'll just start maybe before I go into the first steps of the curry. I'll just say that the Masaman curry has a colorful and very interesting history because the curry originates from India and it sort of traveled through with the spice trade through to Malaysia, to Southeast Asia, and then to Thailand where it has been adapted. So most of the ingredients that we see today will be familiar to viewers because they're used quite a lot in Indian food, but there will be some ingredients that are quite different also. ओके सो इनिशियली हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस रेसिपी को? So the first step would be to de-seed the sukhi mirch, the dried red chili. इसको गर्म पानी में भिगोना है? हाँ हाँ, so de-seed it, and then थोड़ा सा garam pani you need to add to soften Okay. the chilies, जी and then just keep it aside so it'll do its thing. ओके। Um, नेक्स्ट हम क्या लेंगे इसको फिर? next बनाएं। step वो spices है. So we start with the spices, with toasting the spices, जी and that is again dalchini, ilaichi, kali mirch, और धनिया धनिया seeds और जीरा. और जीरा। So तो हम just इसको रोस्ट करेंगे। हाँ हाँ, जी इसको सबको रोस्ट करेंगे हम. So just कितना लाइट ब्राउन या फिर बहुत ज़्यादा रोस्ट करना है? you'll smell it. ओके So till you smell the spices, you keep roasting it. ओके। No oil. नो अच्छा Just dry roast the spices. So you just need to make sure that the heat isn't too high because we don't want the spices to burn. जी We just want to toast them till they're light brown. Especially if you look at the dhania seeds, यस those are a good indicator. So when they become light brown, then you're pretty much done. ओह दैट्स So yeah. यस ये तो हो गए हैं। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इनसे। दैट मीन्स आपने बोला था कि स्मेल आए तो ये रोस्ट हो Till जाते it's हैं। done. Yeah. सो हमारा So we'll स्पाइसेस का काम हो चुका है। हाँ। सो अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है. सो प्रियंका हमारे स्पाइसेस सभी रोस्ट हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप ये है, ये श्रिम्प पेस्ट है. ओके इसको कहते हैं मलय में बलाचन बोलते हैं. ओके So that's what बहुत it's डिफिकल्ट called. नेम है। Yeah, so that's the Malay name belacan, जी but in English it's called shrimp paste. श्रिम्प पेस्ट। Yeah, so और it's ये इसमें पेपर में क्यों कवर कर रखा है आपने? because it's easier to toast in the tin foil, ओके and also because it's made of dried shrimp, the smell is really strong. ओके So it might some people in your home may not like it so much. So just to contain the smell and to toast it easily, I wrap it in some foil. ओके सो So just pop that in there. हाँ हाँ सो कितने मिनट के लिए हमें इसको रोस्ट करना चाहिए? Maybe about 3 or 4 minutes. ओके It's used so frequently in Malay food, in anything from fried rice to fried noodles to. It just gives it gives the food that you're cooking a slightly, I don't know, it deepens the flavor somehow. It's hard to describe. Okay. It doesn't make it fishy because at the end when you taste the curry, you won't be able to taste this at all. But it Alright. just adds to the complexity of the dish. Okay. It makes the flavors more complex. ये हमारा हो चुका है हाँ, हो I चुका guess. है. जी It's easier to tell if you don't wrap it in हाँ. tin foil, but it should be done now. प्रियंका ये जो स्पाइसेस हैं इनको अब क्या करना है? So these are the spices that we just ground. वो दालचीनी, इलायची, धनिया seeds, जीरा और काली मिर्च. ये जायफल का पाउडर है. ये हल्दी है. And this is mace. अब सबको we need to mix करके we need to grind it or Okay. pound it Pound in it. this. ओके तो इसमें हम श्रिम्प पेस्ट भी डालेंगे? हाँ. अच्छा। सब spices के साथ ओके shrimp paste भी add करके जी we'll pound it all. सो प्रियंका हमारा मिक्सचर ग्राइंड आई शुड से पाउंड होके
रेडी हो चुका है हाँ और ये बहुत ही थिन और अच्छा से पाउंड हो गया है एंड आई गेस इसीलिए हम वो यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग ग्राइंडर पर्टिकुलर ग्राइंडर या सो ये बहुत ही अच्छा और बहुत फाइन है ना. हाँ बहुत फाइन है हाँ. महीन है सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रियंका So the next step is to grind all of this. हम्म So वो प्याज, लहसुन, अदरक और chili, हम्म along with the soaked सूखी suki mirch. मिर्च So it should be quite soft now. We've de-seeded this before, so remove the seed so it's not too hot, Okay. too spicy. सो सूखी मिर्च भी उसमें हम लोग पाउंड करेंगे हाँ, ये सबको सूखी मिर्च और all these, the onion, garlic, ginger और इसको भी. सो ये जो रोस्टेड कैप्सिकम है ये आपने घर पे बनाया है या फिर नहीं. So you can make this at home. You जी buy capsicum and roast it in the oven जी for about half an hour फिर or ये so, I think. लिक्विड ही कैसे दिखाई दे रहा है ये oil है. So this I ओह bought it from the. You get it ready made at the अच्छा supermarket. अच्छा It's already been roasted and packed, जी and it's in oil. So after we ground all three of those, the हम्म dried chili, capsicum, and the onion garlic mix, हम्म this is what you get. वाह कलर बहुत अच्छा है है ना? ये कलर एक्चुअली आप ने कैसे मतलब कैसे आया है ये कलर आप It's बताएंगे हमें largely from the red capsicum, roasted आ capsicum. So, you know, when you order dishes in the restaurants, you get them, usually it's the standard color. You get the जी same color all the time. And that's because in many places they use food coloring. तो आ घर पे we don't use food coloring. I don't use यस food coloring usually, but I use things like roasted red pepper to add that color. कलर काफी निखर के आया है इट्स है ना? वेरी नाइस कलर हाँ तो ये क्या है प्रियंका ये lemongrass है. हाँ हाँ It's actually you get it either fresh as a stalk हाँ हाँ or you can get it frozen. ओके New Zealand में. But it has a beautiful smell actually, lemongrass. It's a या lemony sort of. नाइस And so what you would do is you would pound that, you would chop it up, and you'd pound it again, and it would take quite a while. ओके And then you add it to this mix. तो आप देख सकते हैं कि हमने मिक्सचर में लेमन ग्रास को मिला दिया है और आप देख पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन कलर आ गया है इसमें सो नाइस रेड और अब हम इसको करी में यूज़ करेंगे और यही इंग्रेडिएंट्स हमारे मसमान करी को बहुत ही खूबसूरत कलर और टेस्ट देंगे प्रियंका जी अब हम क्या करने वाले हैं इस मिक्सचर के साथ So the next step actually is to fry off a few more spices, and then we'll use this. थोड़ा सा ऑयल डालेंगे oil कितने डालेंगे. टेबल स्पून ऑयल 1 tablespoon. 1 टेबलस्पून ऑयल और ये क्या स्पाइसेस आप यूज़ करने वाले हो जो आपने बताया कि अभी हम एक और स्पाइसेस उसमें ऐड करेंगे हाँ, फिर से दालचीनी. फिर से दालचीनी एक ही पीस दालचीनी जी और 2 पीस वो स्टार अनीस ओके होते हैं. जी So we fry the star anise whole because it's a very strong spice, and we don't. Once you grind it, it becomes very strong in the ओके masala. So we're just using it so that it lightly flavors and फ्लेवर और adds. स्मेल के लिए So it adds a nice fragrance, and it adds a nice light flavor, aniseed flavor ओके to the dish. But we don't want it to overpower it. ऑलराइट So now before this starts to burn, we should add this This our beautiful. mixture? वाओ So should I add that? So what you do is you add. सो I usually add it in lots, but just to keep tabs on how much you're using. ऑलराइट But for the amount that we have today, So this when seems can alright. we make it a mixture and can we keep it in the Yes. fridge for next Yes. dish as So well? yeah, so it'll last. Okay. Now, one thing I did, which a few years ago, हाँ we gave presents to people to all our family members, okay and we decided to give them spice-based alright mixes. So what you can do is you need to fry it off first, though, okay before you pack it. uh-huh So what you do is you fry off all your spices like this, your onion garlic mix, and then you get those little jars, preserving jars, boil them, and then dry them, put the spice mix in, and you vacuum seal it, Oh. and that way it lasts
it'll last for months, 6 months, six, Oh, 8 months at wow. least. That's great. So you can do that, and then you can put little ribbons around it and give it away as presents, So sweet. handmade, homemade presents. Or you can, it'll store in the fridge for about a month. Alright. Yeah. So अभी हम इस मिक्सचर को कितना देर तक फ्राई करने वाले हैं? You need to fry it till the onion and the garlic cooks, Uh-huh. and usually you'll see the oil Yes, coming separate out. from Yes. That's from an the indication, from the right? paste. Yeah, so that's an indication that Okay. it's that it's mixed. You'll also smell it. Yes. So now you can smell the Yeah, onion and yes. the garlic. It's quite raw. That's right. So as it fries, it darkens in color, Mhm. and the smell changes also. Okay. Alright. So that's what you need to look out for. Uh-huh. If it starts to stick, you can just add a little bit of water Water. if you want. Alright. Yeah. So are we gonna add water or it's fine right It now? seems all right so All far. right. So just keep stirring it though, so it Okay. doesn't. So अब हम इसमें कुछ डालेंगे या फिर स्टिल हम कितना देर तक उसको फ्राई करते रहेंगे? थोड़ा सा नमक. थोड़ा सा So, नमक. हाँ. So you पिंच add ऑफ सॉल्ट या फिर कितना क्वांटिटी में हम डालेंगे नमक? pinch of salt. It's really up to your taste, but a good 2 pinches, I would say. Okay. But if you do put too much salt, one little trick that I've learned Okay. is add potato. Ah. So So it potato- absorbs all the salt. Yeah. That's nice. So वाह शेफ के दर्शकों को काफ़ी टिप्स मिल रहे हैं आपसे. So अब इसमें हमने नमक डाला है अभी, तो अभी हम और कितना देर तक मिक्स करेंगे? So now it's almost done. It's sort of half done, and then I'll add the masala. Okay, The- जो हमने हाँ, ऑन किया था. वो garam masala है ना, that we made. Okay. So you just add maybe about 2 2 tablespoons. teaspoons to start. Okay. It also depends on how much meat you're using or vegetables. So you can make this into a vegetarian dish as well. Oh, is it? Yeah. हम क्या vegetables डाल सकते हैं इसमें? कुछ भी. So you can we're putting potatoes in with the chicken today. Okay. But you can put anything. You can chop carrots, beans, eggplant. All right. Yeah. तो कोई भी basic कोई भी. vegetable हाँ, लेके हाँ. हम इस mixture में. Broccoli. Oh, that's Yeah. nice. That's You nice. can make it a mixed vegetable And dish as well. non-veg में हम क्या में यूज़ कर सकते हैं इसको? जैसे चिकन तो आप हाँ. बना ही रही हैं. Almost anything. So lamb, mutton, beef, chicken, Okay. of that. So I'm gonna add a little bit more of the spices. Just और- looking at the color. Okay. So अपने कलर और जितना चिकन आप ले रहे हैं क्वांटिटी के हाँ. अनुसार आप गरम मसाला धीरे धीरे ऐड करते जाइए. जी. जी, we can see that Yeah. a lovely color has come and smell is also coming very nice. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. वाह शेफ के दर्शकों, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ये सब बनाने के लिए और सीखने के लिए. So अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसमें? So once this cooks out nicely, then you add your chicken. Alright. तो हमारा ये मिक्सचर काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है. हाँ. So अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? तो अब we can add the chicken. वो चिकन मैं डाइस करके पहले से ही रख. रखा हाँ, है. पहले से रख. So it's just chop it into Yeah, small bite-sized pieces. अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस सबको. So इसको And- मिक्स करके थोड़ा सा पानी. थोड़ा सा पानी हम डालना डालेंगे. है. सो प्रियंका, आपने ये जो रेसिपी हमें दिखाई है, सो आपने कुकिंग बेसिकली कब स्टार्ट किया और आपका फर्स्ट रेसिपी क्या था? Ooh, that was a while back. हाँ. It's funny because as a child I loved cooking. Okay. I used to, I loved to pretend to cook actually. Uh-huh. I had the little miniature cooking sets that my mother had. I had a little blender that worked. So Okay. you could press the button. Of course, it didn't have a blade. It had a plastic pretend blade. But you could press the button and it sounded like it was blending things. So my mother would stand here and chop vegetables and beans and things like that, and she'd give me the ends of the vegetables, and so I'd put it in my blender and pretend to cook like her.
And so that was actually my first experience in the kitchen. Oh, that's At about really 5 or 6. sweet and nice. So, आपके husband cooking करते हैं? Yes, actually, he does most of the cooking in the house. Oh, is it? So sweet Yeah, of yeah. your husband. Well, yes, but you know, the thing is also that he enjoys cooking. Uh-huh. He loves cooking. He wanted to be a chef before he went into the IT industry. All right. But decided that he wasn't going to do that. But it's his way of unwinding and relaxing. Relaxing. So honestly, who am I to stand in the way of that enjoyment? You know, Exactly, it gives him such pleasure. So one must do what one enjoys. Yes, that's right. Even But I. I'm very lucky. So now the chicken's cooking quite well. Okay. What we'll do is just थोड़ा सा पानी add करके एक कटोरी पानी या एक फिर कटोरी नहीं थोड़ा सा थोड़ा सा maybe a पानी. few tablespoons एक 2 tablespoon पानी just to stop it from burning really Burning. or All right. sticking. तो अभी हमारा ये मिक्सचर में वाटर भी है एंड सब मिक्सचर जो हमने बनाया था हाँ. वो चिकन के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं. हाँ. तो अब हम इसमें आलू डालने का टाइम आ गया है. हाँ आ गया. तो ओके. अब हम इसमें पोटैटोज डालेंगे हम जो कि ऑलरेडी डालेंगे. बॉइल्ड है. हाँ. और हमने 4 पीस में इसको काट लिया है. थोड़ा सा ओके फिर से हाँ करके so thank you. Awesome. So add the potatoes and then वो दोबारा मिक्स करेंगे करेंगे. हाँ. काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है प्रियंका. आई एम श्योर ये जो आपने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस इसमें डाले हाँ. हैं एंड मिक्सचर जो है आपका वो काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है इस रेसिपी को और अच्छा लुक देने में भी और स्मेल से भी. हाँ. सो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फिर उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं प्रियंका? So this is we're nearing the end Okay. of the recipe. हाँ. So after this, what we'll do is add some coconut milk. Alright. So coconut milk ही क्यों? Traditionally, one would use coconut milk or coconut cream. जी. And also Kerala food, maybe we use a lot of coconut, so it's something coconut I'm is familiar like- with. So yeah, so just add. इसको मैं फिर से पकड़ देती हूँ आपके लिए. I Should I do it? I just, All what I right. do is I just put the whole thing in. Okay. So I just dump it all in. हाँ, ये तो अब और भी अच्छा कलर इसमें आने वाला है कोकोनट मिल्क के साथ. हाँ, it lightens the curry Okay. a little bit. सो क्या हम एंड में है इस मसामान रेसिपी के एंड में आ चुके हैं हम? One more step. Okay. So after you add the coconut milk, I'm adding some lime. This is juice of half a lime. Half lime. Yeah, All it's right. quite a big sized Ah. lime. So about the juice of half. This Okay. should do for this quantity. Alright. So then you just add it to the curry. And then give it a good mix. Huh. So mix it well. That's nice. Turn up the heat a little bit. Okay, so इसके बाद हम कितने देर उसको मिक्स करेंगे? Just a minute. Just or a so, minute. And then it's done. So that was Oh. the final step. You can garnish it with some coriander Alright. and basil leaves. काफ़ी अच्छा बॉईल हो गया है ये. So is it ready to dish out? Yep, I think I'd say we're pretty much there. So we'll just reduce the heat. अच्छा. I would actually turn it off at this point Okay. because the pan is hot. Alright. And then just cover it so that it अभी हमने देखा मासमान करी कैसे बनती है, जो कि हमने बहुत सारे स्पाइसेस को मिक्स करके उसमें चिकन डाला और उसमें कोकोनट मिल्क भी डाला. तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.